Hello, my dear student. Good morning. Welcome to Amit Kumar Pradhan Biology classes and welcome to AIS. Today we discuss class 12 biology, human reproduction. What is human reproduction? This is the chapter name is human reproduction. The chapter is most important. This chapter, the reproduction chapter, is most weighted in the CBSE board exam. There is a 16 mark weightage, so it is important around the this CBSE exam. Today we discuss this chapter. What is reproduction? Reproduction is a biological process that individual create their produce offspring similar like itself. And what is the importance of this sexual reproduction? This reproduction helps to the continuity of the species and include the variation, more variation in the individual or offspring. And here the sexual reproduction is more important. Okay, human sexually reproduce, and it is a viviparous. They give birth a young one. What is reproduction? Reproduction is a biological process. It is a biological process biological process and organism produce offspring similar like to itself, and it is helped to this, and human reproduce sexually. Human reproduce sexually human reproduce sexually, and it is viviparous means that is they give birth to young one. What is give birth to young one? Give birth to young one. And another is oviparous mainly birds and reptiles is the oviparous. They produce one egg. Oviparous give birth to egg, and this egg further develop young ones. Okay, this is the what is human reproduction. And they sexually reproduce. That is, this is the importance of sexually reproduce. Sexually means that is variation is more here, because the what is one process in the cell cycle, the meiosis, the production of gamete. Here one is pachitin, the homologous chromosome is patched, and these are exchange their genetic material. So in this region the variation occurs during the cell division, meiosis, or here the spermatogenesis and uh, oogenesis. In this process, here the reductional division of what is in the gametes, like that is called meiosis. Meiosis is the reductional division, and meiosis occurs in the only germinating cell, and mitosis is the equational division or growth and repair. And today we discuss human reproduction. Human is the sexually reproduce, and it is the viviparous. Sexually, the importance of sexual reproduction is the what is variation is more, and more variation means more adaptability in the environment. Okay, now we discuss what is uh, human reproduction. Okay, what is reproduction? Reproduction is the biological process by which the organism can give birth young one, and here's the continuity of species generation after generation. Continuity of species generation after generation, and here prevent to extinction. What is prevent to extinction? Extinction is the one the difficult situation is to come. The
every organism wipe out, like coronavirus, where no any type of adaptation, we then our generation also extinct. Many species also extinct, like dodo and sailor cow. Different is the extinct in our environment, in our atmosphere environment. Human reproduction is the sexually reproduced and viviparous sex organ. Here in the sex organ in human also two type of sex organ. One is primary sex organ, another is secondary sex one. Primary sex organ is the what is testis and ovary. In male that is testis, another in female that is called ovary. And testis and ovary produce of gamete. In the male, testis produce sperm, and in the female, ovaries produce what is egg or ovum. Produce egg and ovum. They are produce sperm male, and here the female produce ovum. Here the testis also secrete some hormones. This hormone secretes the androgen and testosterone. Androgen help to what is the development of secondary sexual character. Androgen help to development of secondary sexual character, and testosterone help to spermatogenesis, production of sperm. And here another is estrogen and progesterone. Estrogen help to develop of secondary sexual character, and the progesterone help to develop the oogenesis, production of what is production of ovum, and help to maintain the uterine wall and continue the gestation period of 9 months. Okay, help in the pregnancy also. That is called primary sex organ. Primary sex organ, production of sperm or egg cell. Production of only sperm or egg cell. Testis produce sperm and ovary produce egg cell. Another is the male secondary sexual organ. Secondary sexual organ is the male. Here the secondary sexual organ is the passage of the gametes transferred to the male to female. That is the secondary sexual organ. This secondary sexual organ include the epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland. Another is penis. Penis is the external genital of the male, that is visible to external, and another is female. Female is the what is fallopian tube, uterus, cervix, vagina, and bulbourethral glands. Not bulbourethral glands. Bulbourethral glands present in the where it is present in the uh, male. Okay, vagina, fallopian tube, uterus, and vagina. Vagina is the genital tract, external genital of the female. Here not visible to external, that is vulva is the visible. Vulva is the external genital organ. So we discuss now what is another is the testis, primary sex organ in the male. Testis, male reproductive system we discuss. Primary sex organ, primary sex organ, development of sex organ. It is the primary sex organ. This is the primary sex organ. Primary sex organ in male is the testis. In the female, in female, primary sex organ is ovaries. The produce ovary in the female produce what is ovum, or testis produce what is sperm. Testis produce sperm, and this testis also produce some hormone. These hormones is the one is what is androgen. Androgen help to development of secondary sexual character, and testosterone help to production of sperm, that is called production of sperm is called spermatogenesis. And ovum produce ovary produce ovum, and this ovary produce what is estrogen, and another is progesterone.
And estrogen is the development sexual character, primary or secondary sexual character, and progesterone helps to maintain uterine wall and help to production of production of egg also. Okay, this is the what is development of sex organ. Primary sex organ, primary sex organ in the male is the testis and female is the ovaries. Now we discuss what is testis. Testis is the primary sex organ of male. Primary sex organ of male, it is origin is mesodermally origin. Mesodermally means that is when our we develop in the fetus in our mother. In this time testis also originate. Okay, that is called mesodermally origin, and it is homologous to the what is ovary. Homologous to the ovary. Homologous in the different structure function, similar function is the homologous. Okay, and different structure similar is similar function is called homologous. In adult is testis has oval shaped, oval shaped, like oval shape. And here adult is testis has oval shape, length 4 to 5 centimeter, with 2 to 3 centimeter, length 4 to 5 centimeter, and width is 2 to 3 centimeter, and development across the abdominal cavity, descend into scrotum. The when the fetus in the fetus stage, after before the birth, the testis is present in the abdominal cavity. Okay, and where the inguinal, through the inguinal canal, with the help of spermatic cord, the testis is uh, testis is good the testis is, with the help of spermatic cord, inguinal descent to the scrotum. ओके, जब हमारा क्या रहता है कि हम बार्थ से पहले मम्मी के पेट में रहते थे, उम्ब में रहते हैं, तब क्या होता है कि टेस्टिस अंदर रहता है इसका एब्डोमिनल कैविटी में. उस एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है कि आफ्टर बार्थ इन्गुइनल कैनाल की हेल्प से स्पर्मेटिक कण की मदद के स्क्रोटम में डिसेंड किया जाता है, स्क्रोटम में उतर आता है. ओके, एंड स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन द 2 to 2.5 degree temperature lower than the normal body temperature. This normal body temperature help to maintain, help to spermatogenesis, production of help. This minus 2 to 2.5 degree temperature, that is the full temperature for production of sperm or spermatogenesis. It is the necessary for spermatogenesis. Spermatogenesis means production of sperm, production of production of sperm. Now we diagram, we learn with the diagram how to descend to the scrotum of the testis. Okay, how to descend scrotum in the testis. This is the thoracic cavity. Our body is 3 cavity. One is thoracic cavity, abdominal cavity, and lower is the pelvic cavity. And this time the before the birth, what is the present of testis in the abdominal cavity? Presence of testis in abdominal. This is the thoracic cavity, thoracic region, and this is the abdominal cavity, and this is the lower part is the pelvic cavity. In the thoracic cavity, abdominal cavity, testis present the abdominal cavity, and this abdominal cavity, okay, through the inguinal canal. This is the canal, inguinal canal help the spermatic cord. This is the spermatic cord. Scrotum descent to the what? Scrotum. Sorry, testis descend to the scrotum, and this is globular gubernaculum tissue help to attach the testis in the wall of scrotum. ये gubernaculum टिश्यू से बना हुआ है, इसी टिश्यू से ये scrotum अटैच रहता है. ये this is the enlarged view of the scrotum. Scrotum, ठीक है, ये scrotum है. This is the pouch like structure help to maintain the temperature 2 to 2.5 degree centigrade. That temperature help to production of sperm or spermatogenesis. It is the 2 chamber. This is 1 chamber. This is 2 chamber. Okay, divide by 2 chamber. पहले बात से पहले क्या रहता है कि जो मम्मी के पेट में जब बिफोर बार्थ से पहले क्या रहता है, टेस्टिस क्या रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पर रहता है. आफ्टर द बार्थ ये क्या रहता है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है.
ये क्या है, ब्लू कलर का एक स्पर्मेटिक कण है। इस स्पर्मेटिक कण के थ्रू से ये क्या है, इन्ग्विनल कैनाल, इन्ग्विनल कैनाल में ये आ जाता है। इन्ग्विनल कैनाल के थ्रू से स्क्रोटम में डिसेंट हो जाता है, उतर आता है। ओके, डिसेंट हो जाता है मतलब उतर आ जाता है। ओके, ये है बाहर वाला लेयर, स्किन है, स्किन से कवरिंग है, स्किन से। एंड जो बाहर में एक रेड कलर का है, ये डार्कूस मसल है। क्या मसल्स है ये, डार्कूस मसल्स है। डार्कूस मसल क्या करता है, उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द स्क्रोटम। एंड नेक्स्ट इज इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया एंड क्रेमास्टिक फेसिया। क्रेमास्टिक फेसिया अटैच टू द टेस्टिस इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में उसको सपोर्ट करता है, स्क्रोटल सेप्टम। एंड ये क्या है, स्क्रोटल सेप्टम। ठीक है, ये टोटल डायग्राम है। जब क्या होता है, डार्को मसल, तब बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलर है, तो एनवायरमेंट में एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या है, एक्सेस कोल्ड है, तब क्या है, स्पर्म को टेम्परेचर चाहिए मेंटेन करने के लिए। आउट ऑफ बॉडी कैविटी में है तो उसको टेम्परेचर लो हो जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये क्या है, डार्कोस मसल हेल्प करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वो थोड़ा बॉडी के ऊपर लेता है। बॉडी में क्या है कि 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होकर रहता है। हम क्या है, एक हॉट ब्लडेड एनिमल है, हमारे बॉडी में क्या रहता है कि टेम्परेचर मेंटेन होकर रहता है, उसी टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ले जाता है। ठीक है, जब एनवायरमेंट में ज़्यादा गर्मी है तो उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, कोल्ड चाहिए। तो इस डार्कोस मसल और एक्सटर्नल इंटरनल फेसिया उसको रिलीज कर देते हैं, तो बॉडी से ही दूर चला आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा स्क्रोटम में क्या चाहिए, ब्लड का सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है कि यहाँ पर एक आर्टरीज, वैन और नर्व्स का भी कुछ आता है। ठीक है, इस स्पर्मेटिक कर्व से। और जो ये है भास डिफरेंस है। ओके, नाउ डिस्कस व्हाट इज टेस्टिस। दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस स्क्रोटम हो गया। नेक्स्ट वी डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इट इज द 8, number 8. This is the male reproductive system. Okay, wait. This is the male reproductive system. Male reproductive system consists of what is male reproductive system consists of male reproductive system consists of a pair of testes and a pair of testes. Now we discuss what is the male reproductive system. Male reproductive system consists of a pair of testes, then rete testis, vas, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, and some accessory glands also. Okay. Now we discuss male reproductive system. Male reproductive system. This is include a pair of testes. Pair of testes means two. And where is the rete testis present? Rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. This is the primary sex organ. Testis is the primary sex organ. Vas deferens, and this is the passage of the gamete or sperm. Last is the penis, and some accessory glands also present. Some accessory glands also present. They secrete some substance secretes, some enzyme secretes. That is called seminal vesicle, and prostate glands, and bulbourethral glands also present. These are called accessory gland. This is the testis primary, secondary sex organ,
retive testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, and penis, and some urethra also present. Urethra. This is the male reproductive system. Now we discuss what is in the male reproductive system, the structure of male reproductive system. Male reproductive system, first the in the male reproductive system what is present? This is the urethra, sorry, urinary bladder. This is the urinary bladder, and it is consist of a pair of testes. It is consist of a pair of testes. Okay, what is this? Consist of a pair of testes. This is the testis, a pair of testes, and this testis, here the seminiferous tubules present. This is the seminiferous tubules present. After seminiferous tubule, this is the rete testis. What is this? Is the rete testis, and here it is joined into the vasa efferentia. Vasa efferentia. Vasa efferentia. This vasa efferentia highly coiled, and it is the joined to the, you see the vas deferens. Vas deferens. This सेमनीफेरस ट्यूबुल प्रोड्यूस ऑफ द स्पर्म. सेमनीफेरस ट्यूबुल क्या करता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और रेटे टेस्टिस में रहता है. रेटे टेस्टिस से क्या रहता है? भाषा इफ्रेंसिया. भाषा इफ्रेंसिया टू भास डिफरेंस. ये क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन यूरेटर आ जाता है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर यूरेटर आ जाते हैं. ये क्या है? किडनी से यूरेटर आ जाते हैं. यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का डिपोजिशन हो जाता है. तब क्या होता है कि हमारा जो भाषा इफ्रेंसिया आगे जाकर यहाँ पर जो यूरेटर के साइड्स में आता है, यूरेटर को गुजरते हुए ये आएगा. यूरेटर को गुजरते हुए दोनों तरफ से क्या होगा? ये यूरेटर को क्रॉस करते ही आएगा. भाषा इफ्रेंसिया क्रॉस टू द यूरेटर एंड जॉइंट टू द हियर यूरिनरी ब्लैडर. हियर यूरिनरी ब्लैडर आने के बाद वहाँ पर एसेसरी ग्लैंड है. एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर हमारा आ जाएंगे. एसेसरी ग्लैंड मतलब सेमिनल वेसिकल्स. दो एसेसरी ग्लैंड क्या है यहाँ पर? ठीक है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल. ये क्या है हमारा? सेमिनल वेसाइकिल. सेमिनल वेसाइकिल. ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल, इसको हमें जॉइंटली, ये क्या है? एम्पुला. 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 हियर इज द परमानेंट स्टोरेज ऑफ स्पर्म. यहाँ पर क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है. थोड़ा वाइडर रीजन को हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये आकर वहाँ पर एक साथ ये आ जाएंगे ऐसे. ठीक है, यहाँ पर दोनों सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड सिक्रेशन करेगा. इसी पार्ट को हम इजाकुलेटरी डक्ट बुलाते हैं. इजाकुलेटरी डक्ट. ये क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट. फिर इजाकुलेटरी डक्ट ये क्या होगा? फिर आगे जाकर हमारा एक ग्लैंड्स आएगा. ठीक है, ग्लैंड्स का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या है ये? दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड. बोथ साइड क्या होगा? एक प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर आ जाएंगे. प्रोस्टेट ग्लैंड. फिर यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और व्हाट इज दिस इज द काउपर्स ग्लैंड्स. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स. दिस इज द, ये क्या है हमारा? इजैकुलेटरी डक्ट के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या है ये हमारा? प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अब जो ब्लू कलर का है, क्या है ये? ब्लू कलर का क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. ये क्या है हमारा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड.
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये अपने सिक्रेशन डालते हैं, ठीक है। फिर यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा आगे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। क्योंकि मेल में क्या है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, ये क्या है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मतलब एक ही ट्रैक्ट में यूरिन और स्पर्म का क्या होगा, बाहर निकलेंगे एक ही पाथ में, ठीक है। एक ही रास्ते में क्या होगा, ये यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते में आएंगे। एक ही रास्ते में हमारा आएंगे स्पर्म और यूरिन, ओके। दिस इज द स्किन ऑफ द पेनिस, this is all the skin of the penis, okay. After this is the skin of penis, okay, this is the skin of the penis and this opening is called urethral meatus। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, यूरिथ्रल मीटस, जहां पर यूरिन पास आउट होता है और जहां पर क्या पास आउट होता है, ये स्पर्म पास आउट, यूरेथ्रल मीटस। एंड दिस इज कॉल्ड फोल्डेड स्किन इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। पेनिस का जो आगे वाला पोर्शन है उसको ग्लैंड पेनिस बताया जाता है। और पेनिस के अंदर कुछ इरेक्टाइल्स टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इरेक्टाइल टिश्यू इरेक्शन के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेक्टाइल टिश्यू। ये क्या है, एक हमारा एक इरेक्टाइल टिश्यू है, ये वन इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, अनदर इरेक्टाइल टिश्यू। ये क्या है, एक इरेक्टाइल टिश्यू, दो इरेक्टाइल, इसको बोला जाता है कॉर्पस कर्नोवोसा, वन इज कॉर्पस कर्नोवोसा, another is corpus, another is corpus spongium, another is corpus spongium। this is our erectile tissue, corpus spongium and corpus, if two are what is, these are erectile 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 tissue, these are two are erectile tissue, help for erection or spermiation and help to the erection। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ये पेनिस क्या है, हमारा एक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, जो बाहर से दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। पेनिस इज द एक्सटर्नल एंड इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन आल्सो। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इट इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और मेल copulatory organ, external genital organ and male copulatory organ, and it is made up of special erectile tissue help of ejaculation। It is made of special type of erectile tissue, it is help in copulation, it is help in copulation, special type of erectile tissue corpora carnosa and corpora spongium तो क्या करते हैं, इरेक्टाइल करेंगे, हार्डनिंग ऑफ द पेनिस होगा, फिर हमारा कॉपुलेशन में ये हेल्प करेगा। एंड सीमेन आउट द मेल बॉडी, कॉपुलेशन मीन्स क्या है, सीमेन आउट फ्रॉम मेल बॉडी से सीमेन आउट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। एंड अनदर इज इंसेमिनेशन, कुछ वर्ड है हम इसको जान लेते हैं, इंसेमिनेशन मतलब क्या है, सीमेन आ रहा है, ठीक है, सीमेन मतलब क्या है, इंसेमिनेशन, सीमेन ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सीमेन ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट,
सीमेन मीन्स क्या? व्हाट इज सीमेन? सीमेन स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा. सीमेन मीन्स स्पर्म प्लस seminal plasma. Seminal plasma, what is the secretion of seminal vesicle? What is seminal plasma? Secretion of seminal, secretion of, what is secretion of accessory gland? Secretion of accessory glands. Accessory glands, what is accessory gland? Seminal vesicle, seminal vesicle, prostate gland, prostate glands, एंड अनदर इज प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. ये क्या है हमारा? एक सिक्रेशन है. ओके, एंड हियर द दिस सिक्रेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिक्रेशन एंड दिस ग्लैंड्स? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल contain fructose. Fructose help to the give the energy to the sperm. Fructose क्या करता है? एनर्जी टू स्पर्म, गिव एनर्जी टू स्पर्म. कहाँ पर एनर्जी चाहिए? जब स्पर्म मोटाइल करता है, जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, तब क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए एग की तरफ जाना पड़ता है, उसको मूवमेंट करता है, उसके हेल्प ऑफ टेल में. जब फ्रूटोस है और स्पर्म का मिडिल पीस में क्या रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, वहां पर वो फ्रूटोस को एटीपी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी मिलता है, उसी एनर्जी के साथ वो मूव करता है एग की तरफ, फोलिपियल ट्यूब और एम्पुला रीजन तक वो क्या करता है? पहुंच जाता है, और उस एनर्जी के हेल्प से वो पहुंच जाता है. ठीक है, एंड fructose and prostate gland, seminal plasma, and some enzyme also present here. The this part, some enzyme also present. Which enzyme? Here seminal fluid alkaline, ये seminal fluid present रहता है. Seminal fluid, it help to alkaline of alkaline एनवायरमेंट, गिव अल्कालाइन एनवायरमेंट. जैसे हमारा वहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म में जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, एक ही रास्ते में आता है, तो यूरिन क्या है? एक एसिडिक है, पीएच है, तो यहाँ पर ये अल्कालाइन एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता है. अल्कालाइन अगर पीएच ज़्यादा हो जाए, स्पर्म का डेथ हो जाएगा, तो अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रेशन कर लेता है, सेमिनल फ्लूइड, एंड इट इज द विस्कस फ्लूइड. viscous fluid help to the sperm coagulate. स्पर्म को कोआगुलेट, थोड़ा मोटा वाला है, कोआगुलेट करेगा. ठीक है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजेन प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजेन. प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजेन. प्रोस्टाग्लैंडिन help to contraction to the uterus, help to contraction of यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पर्म का मूवमेंट इजीली होगा. एंड फाइब्रिनोजेन हेल्प टू कोआगुलेट ऑफ स्पर्म, इफ द स्पर्म इज नॉट कोआगुलेट, स्पर्म एनर्जी ऑफ लॉस्ट. कोआगुलेशन होगा तो, कोआगुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म मूवमेंट करते रहेंगे. ठीक है, और मूवमेंट करेंगे तो उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा. ठीक है, एनर्जी कहाँ चाहिए? वहाँ पर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसका एनर्जी मोटिलिटी रेट ज़्यादा होना चाहिए, तब उसमें ओवम के पास जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा. ठीक है, और फाइब्रिनोजेन उसको कोआगुलेट करके रखता है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या है नेक्स्ट हमारा? प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इट इज सीक्रेट प्रोस्टेटिक फ्लूइड हेल्प टू अल्कालाइन नेचर बनाता है वहाँ पर. ठीक है, अल्कालाइन नेचर, यूरिन निकलता है तो वहाँ पर पीएच ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, एसिडिक पीएच हो जाता है, उसको बेस बना लेता है. ठीक है, एंड हियर द कैल्शियम सर्टेन एंजाइम सीक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड
some calcium also present. Calcium present, and what is calcium? After the calcium, it is some enzyme, certain enzyme also present. Certain enzyme also present. कैल्शियम होगा तो मोटिलिटी, जो कैल्शियम क्या करता है, टेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टेल में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, BUG, और इट इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, व्हाट इज द वर्क ऑफ, इट इज a pair of bulbourethral glands present and pre-ejaculatory secretions. What is it? Is the pre-ejaculatory secretion। इजैकुलेशन से पहले, स्पर्म का ट्रांसफर होने से पहले ये सिक्रेशन होगा। और जो यूरेथ्रा में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, उसमें जो एसिडिक है, एसिडिक पीएच है, उसको बेस बनाना है, अल्कालाइन बना लेता है, अल्कालाइन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा और यूरिनोजेनिटल जेनिटल ट्रैक्ट को अल्कालाइन बना लेता है, ठीक है। एंड हियर द नाउ वी डिस्कस व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, खत्म। दिस इज द एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड एंड bulbourethral gland, these three secretion and sperm, that is called what is semen, what is semen, semen secretion of seminal vesicle plus bulbourethral gland plus prostate glands. These three glands secretion is called, and plus sperm, and plus sperm is equal to what is semen। सीमेन क्या है, स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द अनदर 2 और 3 टर्म्स, 2-3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। क्या है, स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू फॉर्म द सेमिनिफेरस ट्यूब। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म into or from seminiferous tubule, seminiferous tubules, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो स्पर्म रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएशन। अनदर इज कॉल्ड सेमिनेशन, सेमिनेशन, सेमिनेशन रिलीज ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, रिलीज ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, टेस्टिस से रिलीज जब स्पर्म होता है उसको सेमिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट इजैकुलेशन, व्हाट इज इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मीन्स व्हाट इज रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल बॉडी, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, मेल बॉडी का जो रिलीज होगा। स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म रिलीज कहाँ होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रेटे टेस्टिक तक। सेमिनेशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस से जब वास्ट डिफरेंस निकलता है तब क्या है, इस सेमिनेशन है। इजैकुलेशन मतलब क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी से जब स्पर्म निकल जाता है तब इजैकुलेशन बोला जाता है। इजैकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में स्पर्म का ट्रांसफर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इंसेमिनेशन। ओके, दिस इज द व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे सीमेन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द अनदर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव system. Next class we discuss the female reproductive system. It is the male reproductive system. Okay,
watch the video, it is helpful for your exam. Okay, thank you.